हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर. दिस इज अंजलि प्रताप एंड वी आर वंस अगेन इन आवर English session, and this session in this series is going to talk about again another aspect of our comprehension part. So, when we hear the word comprehension, we know that we have to do, or basically, we have to spend some time in reading something, right? Because the entire concept of comprehension means what? The way we are interpreting something, the way we are understanding something. So, how well you understand a piece of article is going to play a very important role in this particular question. Okay, so we are going to do a set of odd one out. Okay, so odd one out is done in quite a similar manner जैसे हम अपने sentence rearrangement या paragraph रीअरेंजमेंट जो करते हैं उन क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इन क्वेश्चंस को भी डील करना चाहिए. सो वी विल सी इन अपकमिंग क्वेश्चन दैट व्हाट इज द राइट वे, द राइट स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू सॉल्व सच क्वेश्चन. बट बिफोर दैट लेट्स रीड द direction first, everyone. Read the following sentences properly and pick the odd one out, which is not really going with the theme of the other sentences. And rearrange the remaining sentences in a coherent paragraph and mark the correct sequence as your answer. If all the given sentences form a coherent paragraph, फिर तो आपको option number 5 चुन लेना है. ठीक है, we are all clear till here. चलिए, let's have a look at the question now. एक बढ़िया एडवांटेज हमको ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या मिलता है स्टूडेंट्स? वी हैव द ऑप्शंस प्रेजेंट फॉर अस, बट फॉर पैरा जंबल और सेंटेंस जंबल वी डोंट हैव द ऑप्शंस, राइट? तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. तो सबसे पहला काम क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटेंस विच इज़ नॉट गोइंग रियली वेल. मतलब हमारा जो पैराग्राफ है उस सेंटेंस वो ढूंढनी है जो बिल्कुल बिलोंग नहीं करता है हमारे पैरा को. लेट्स रीड इट टुगेदर एवरीवन. Okay. Even a marginal rise above the normal will lead to enormous heat stress for millions of Indians, given the deprived conditions in which they live. For most other states, though, the summer of 2018 may pose a public health challenge for which they must prepare with the experience gained during the many previous heat waves. The Indian Meteorological Department's forecast of above normal maximum and minimum temperature across the country during the pre-monsoon March-May period is a timely alert for state authorities to review their preparedness. अगर आप अभी तक जितने सेंटेंस हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, C is one such statement जो पूरे पैराग्राफ को ऐसा लग रहा है इंट्रोड्यूस कर रहा है, isn't it? तो चलो ये अभी तक तो हमारी कैटेगरी में सबसे ऊपर है. आई मीन दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेंटेंस. ओके, it is the responsibility of governments to ensure that community level interventions are taken up to help such vulnerable groups. ठीक है, okay, fine. Moreover, there are distinct groups at particular risk for health related problems during a heat wave, such as senior citizens and people with pre-existing disease, mental illness or disability, which prevents them from being able to care for themselves. अगर हम यहाँ पे ऑप्शन का थोड़ा इस्तेमाल करें, so we know that our arrangement will start with C, right? So we are quite lucky to have only one option जो हमें ये चीज़ देखने पे या समझने पे हेल्प कर रहा है, right everyone? बट इन एग्जाम यू माइट कम अक्रॉस सच ऑप्शंस जिसमें शायद दो ऑप्शंस ऐसे हों जो सी से स्टार्ट हो. गाइस, अगला पार्ट आपको क्या करना है? अगली चीज़ आपको कोई भी पेयर बना लेनी है. जैसे आप सब यहाँ देख पा रहे थे दैट ई डी इज़ अ पेयर, राइट? बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ दिस सच वल्नरेबल ग्रुप्स. किसको रेफर कर रहे हैं? whom वी आर रेफरिंग योर? दीज सीनियर सिटीजन्स एंड पीपल विथ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज, राइट? तो ऐसे आपको पेयर बना लेना है एंड यू कैन सी पेयर इज अगेन अवेलेबल इन ओनली वन ऑप्शन, राइट? ओके, लेट्स ट्राई सेकेंड क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू सम टाइम. आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, पहले ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो और फिर अपने आंसर्स को मैच कीजिए हमारे साथ. सॉरी. So I hope
आप लोगों ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा. नाउ वी विल डिस्कस इट टुगेदर एवरीवन. Legal provisions to confiscate is to seize the assets of offenders already exist, but these are regarded as somewhat inadequate. Okay. However, its success rides on the slim hope that the threat of confiscation of property will act as a serious deterrent to those seeking to flee or as a big incentive for fugitives to return. So, very clearly, we are talking about the legal provisions, especially those who has done something. I mean, they are offenders, और हम उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने की बात कर रहे हैं, कन्फिस्केट करने की बात कर रहे हैं. Given the apparent ease with which economic offenders flee India and cock a snook at the banking and judicial systems, the proposed law to seize their wealth is undoubtedly a welcome measure. People aware of this investigation said that the banks were asked general questions on the loan disbursement, which were answered. In fact, given the public disquiet over the apparent impunity enjoyed by billionaire fraudsters living in the safety of foreign climes, any new law is likely to be viewed in a positive light. So, like overall idea तो काफ़ी हद तक सेम लग रही है. तो आपको समझ में आया कौन सा सेंटेंस के साथ हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं? चलिए, लेट मी शो यू द ऑप्शंस. अगर ऑप्शन देखिए तो समझ में आ गया होगा कि हम अपना पैरा किससे स्टार्ट कर सकते हैं. नो, इट्स नॉट बी वॉट यू आर थिंकिंग. नो, आप सोचो ज़रा. हाउएवर के साथ हाउ कैन वी स्टार्ट आवर पैराग्राफ, राइट? हाँ जी. तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ पे पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा था वो किसकी बात कर रहा था? एक लॉ के ऊपर था फोकस्ड, राइट? लॉ के ऊपर फोकस था. So now if you see all the sentences, only one sentence is there which has not even talked about, not even referenced about that law, and that was sentence number D. आप देखो यहाँ पे लीगल प्रोविजन की बात हुई है ना. हम यहाँ पे जो है ना उस लॉ की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर ये होप टिका हुआ है. यहाँ पे भी हमने जुडिशरी सिस्टम्स की बात की, जुडिशियल की बात की है. यहाँ पे भी हम लोगों ने बात की है लॉ के ऊपर. सो ओनली सेंटेंस डी वॉज देयर जिसके ऊपर बिल्कुल भी हमने बात नहीं की है लॉ के लिए. तो अगर इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो आवर राइट आंसर इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर डी. क्लियर एवरीबडी? ये डी की वजह से आउट हो गया एंड वी कैन नॉट स्टार्ट आवर पैराग्राफ विथ बी एंड बी. सो दैट्स वाई वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज डी. अब I think now you people are more comfortable with these kind of questions. Let's try one more. एक last question try करते हैं everyone. आप फिर से यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, attempt it yourself and then you can resume the video. Okay, let's start attempting it together everyone. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. ऐसा लग रहा है कुछ imagery create कर रहे हैं. Now that we were leaving Ravu, Lamos said she wanted to give me a farewell present. One evening, I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. And she had said that I ought to get some warmer clothes. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. So what do you think? सब तो लग रहा है एक ही कहानी की बात हो रही है. Let me show you the options also. सोचिए क्या हो सकता है? Which was the sentence which seems out of the context? Have a look at the paragraph once again.
A is talking about goodbyes. B is creating that imagery which has been already said in A. C is actually adding information that who is leaving what, right? Then D talks about the farewell present का history कि कैसे हुआ क्या हुआ, farewell present क्यों उसे क्या मिला, right? तो D actually talks about or explains the scenario, and E is just summarizing the above sentences. Guys, actually the answer for this question was E. ये पैराग्राफ अपने आप में कंप्लीट था. ऑल sentences in the given form, in the sentences which were given actually form a coherent paragraph. कोई आपको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, right? So we can expect such questions also in the exam, everyone. So be prepared for such question to attempt. Apart from that, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी. डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट एंड अटेम्प्ट दैट एवरीवन, एंड फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन इफ यू एनकर एनी वाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीबॉडी. मिलते हैं अगली सेशन में. बाय बाय एंड टेक केयर.